Hello friends, myself Ramdas Patel. Today I would like to teach you business study. So we start from beginning. What are business study? Nature and purpose of business. Nature and purpose of business. Business is a major economic activity. Uh, you people always heard here what is business. Business is a economic activity. तो आपको हमेशा याद रखना है कि बिजनेस क्या है. बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. देन कॉन्सेप्ट. व्हाट अ कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस. कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस is being busyness. Business means what? Being busyness, being busy in economic activity. That's all. Being busy in being busy in economic activity. Then definition. If we see about definition, then what are definition of business. Business is a economic activity involved in production and procurement and sales of goods and services. Means it is economic activity related with production, procurement, sales of goods and services. This is the definition. So here we give the emphasis on which word? Production, procurement, sales, goods, services and economic activity. If we combine all those things, then what would be the definition? Definition will be business is an economic activity related with production and sales of goods and services for fulfilling the human needs. Then second one is what? Why we need business. Why we need business. Need, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें बिजनेस करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी. Then why we need? For satisfying human needs and wants. For satisfying human needs and want. So that's all. Nature of business means it is a economic activity. That's all. Concept of business is state of being busyness in economic activity. Definition. Business is related with production, procurement, sales of goods and services for satisfying human needs and want. Then we see about characteristics of business. We see characteristics. It is a production, procurement, second one is a economic activity, sales
और exchange of goods and services, sales of goods and services, dealing or exchanging goods and services in a regular basis, or profit earning. Third is a selling and purchase in regular basis, and last one is a profit earning. So we talk about the characteristics of the business. First one is a production and procurement. What is production? If we see the definition of production, then production is a conversion of raw material into final goods or consumable goods. प्रोडक्शन वो चीज़ है जो रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं फाइनल गुड्स के लिए, और जो कि कंज्यूम होने के लिए रेडी है, मीन्स रेडी टू कंज्यूम. दैट प्रोडक्ट इज रेडी टू कंज्यूम. देन सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Another characteristics in business, any businessman always busy for sales or exchange of goods and services. In which terms? अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, तो किस में एक्सचेंज करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज इनटू मनी के टर्म्स में. मनी, कस्टमर प्रोडक्ट लेगा, देन बिजनेसमैन को मनी देगा. तो मनी एंड प्रोडक्ट, कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू मनी. ओके, मनी, then money convert into product or product convert into money. That is the exchange of sales of goods and services. Then another, selling and purchase of regular basis. If we sell only one time any product, or we purchase any product in one time, it cannot be a business. अगर हम कोई चीज़ एक बार खरीदते हैं, एक बार बेचते हैं, दैट कैन नॉट बी कम्स इनटू बिजनेस. वी ऑलवेज, इफ वी आर डूइंग अ बिजनेस, देन वी हैव टू इन्वॉल्व इन सेलिंग और परचेसिंग इन अ रेगुलर बेसिस. हमें जो है रेगुलर बेसिस पे रेगुलरली हमें सेलिंग एंड परचेस करना होगा. देन ओनली वी कैन से दैट वी आर डूइंग अ बिजनेस. देन अनदर, profit earning. It's a very important characteristics in business, profit earning. If we cannot earn profit in our business, then we cannot survive. Why we need profit? Why we need earning profit? Because survival and growth of business. अगर हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे तो हम आगे बिजनेस में बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर सकते और अपने बिजनेस का एक्सपेंशन नहीं कर सकते, हम ग्रोथ भी नहीं कर सकते. सो व्हाई वी नीड प्रॉफिट? देन व्हाई वी नीड प्रॉफिट? बिकॉज ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ आवर बिजनेस. It's a very important characteristics, profit earning. Then last one is also a very important characteristics, uncertainty of profit. Uncertainty of profit. Uncertainty of profit or return. We can say that profit or return. So if before talking about the uncertainty of profit or return, one thing I would like to tell you, there is no anything are certain in this world except death. मृत्यु के सिवा इस पूरे दुनिया में कोई भी चीज़ सत्य नहीं है सिवाय मृत्यु के. आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ तो मैं इतना प्रॉफिट कमाऊँगा, इतना मैं रिटर्न पाऊँगा. यू कैन नॉट टेल एनी थिंग्स रिगार्डिंग रिटर्न और प्रॉफिट.
यू कैन नॉट टेल, ओनली एक्सपेक्ट, सिर्फ आप उम्मीद कर सकते हो. देयर इज़ नो एनी गारंटी, देयर इज़ नो एनी गारंटी अबाउट प्रॉफिट और रिटर्न इन बिजनेस. ओनली वन थिंग इज़ अ वेरी सर्टेन, दैट इज़ डेथ इन लाइफ, and rest of things are completely uncertain, completely uncertain. You cannot say anything, you cannot give a guarantee for anything. Okay, then comparison about business, professions and employment. So next, uh, we always listen, uh, I am doing business, I am a professional, I am a employee. Okay, then what are the difference between business, professionals, profession, then employment? Okay, employment. This is the what are the basic difference between business, professions and employment. Then business, it requires no any kind of skills or degree. It it can't require any skill or degree. The in profession, it requires special skills, and degree. Then employment, it requires only degree. First one. Then second, in profession, in business, there is no need of any special knowledge. No need for special knowledge. Yeah, need for special knowledge. Special knowledge, not special. In employment, only required for knowledge. Then earning, return or profit, and fee, consultation fee, then salary. Okay, I think you people understand about the what are the difference between business, profession and say, employment. So let us explain. इन बिजनेस में किसी भी तरह की कोई भी हमें ना स्किल चाहिए ना डिग्री चाहिए. अब रोड में कोई ठेला लगा रहा है, कोई समोसा बेचने लगा. अब ये आप कह सकते हो कि उसका समोसा बहुत अच्छा है, तो उसने कुछ स्पेशल उसमें ऐड किया होगा. बाकी समोसा बेचने के लिए, समोसा बनाने के लिए कोई स्किल और नॉलेज की ज़रूरत नहीं है. आप भी रोड में आलू खरीदिए, ठेला लगाइए, बेचना चालू कर दीजिए. सो उसके लिए कोई डिग्री नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए, MBA होना चाहिए, या कि आप BSc होना चाहिए, कोई एनी काइंड ऑफ एनी स्पेशल ऑफ डिग्री. देन प्रोफेशन में आपको स्पेशल स्किल्स चाहिए, जैसे डॉक्टर्स है, CA है, एडवोकेट्स हैं. दे आर को डिग्री भी चाहिए, डिग्री के साथ साथ एज वेल एज स्पेशल स्किल भी चाहिए. देन एम्प्लॉयमेंट, it requires a minimum qualification for performing their jobs. Then बिजनेस में नो नीड ऑफ स्पेशल नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है. बिजनेस में आपको कोई स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर प्रॉफिट और रिटर्न, देन यू हैव टू नीड फॉर स्पेशल knowledge.
इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर बिजनेस, बिजनेस में अनसर्टेनिटी है, रिस्क है, इनको आप मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आपको स्पेशल नॉलेज की जरूरत है. दैट्स वाई इन दिस टाइम प्रोफेशनल्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड इन बिजनेस. दैट्स वाई in any business there is a need for business professionals. Then a need for special knowledge. प्रोफेशन में अगर देखते हैं तो उसमें हमें स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत है. इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज़ नो एनी नीड फॉर स्पेशल नॉलेज, ओनली नॉलेज शुड बी देयर. देन इन लास्ट, बिजनेस में आपको पैसे कैसे मिलेंगे? इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिट्स. और प्रोफेशन में कैसे मिलेगा? इन द फॉर्म ऑफ कंसल्टेशन फीस एंड फीस. देन एम्प्लॉयमेंट में यू विल गेट अ सैलरी or whatever your employer will give you, then you have to take. Okay, then it's all about a difference between business and professions and employment. Then classification of business. Classification of business means industry classification. Classification of business. Classification means business divided into two parts. First one is a industry. Second one is a commerce. So what are the industries? Industry, it is related with manufacturing, processing of raw material into final goods. Then what are commerce? Commerce, it facilitate the industry and provide auxiliaries to industry. Then example industries, अगर देखें तो then any manufacturing industries, Tata Steel, Birla Cement, many more, etc. Commerce एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, many more, etc. Okay, I think you understand about the industry. Industry is related with your manufacturing or production and processing of goods and services, converting of raw material into final goods. Commerce, it provide a facilitation to the exchange of goods and services, or it provides a facility to the industry. Auxiliary services. Commerce provide auxiliary services to the industry. What are the examples? Then many examples of for industries like Tata Steel, Birla Cement, etc. Then commerce, there is a transport, banks, insurance, etc. Then it further divided into industry. Last topic of this session, industry. The last topic for industry, last topic. And further divide, if we divide industry in what are the industries? Primary industry, secondary and tertiary. Primary, secondary and tertiary. Then we also further divided any primary industries
then extractive or genetic. Extractive or genetic, extractive or genetic. In secondary industry, manufacturing or construction, manufacturing and constructions, manufacturing and construction. Then if we talk about the manufacturing industry, it is also divided into four parts: analytical, synthetical, and processing or assembly, processing and assembling. So these are the types of industries. So in next lecture I would like to teach you about the classification of industries. Thank you.